Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is grade 7 English, and today I'm going to explain to you three types of nouns. There are more than three types of nouns, but today we're going to discuss only three types of nouns. They are collective, countable, and uncountable nouns. So I would like you to open your books to page number 6. And on page number 6, on the right side, you would see there's a read me corner, right? So let's read the definitions and let's find out what countable, uncountable, and collective nouns really are. Countable nouns are words for things that we can count. These nouns can be both singular and plural. Uncountable nouns are words for things that we can't or cannot count. They do not have a plural form. अब जो सबसे बड़ा डिफरेंस है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में ये है कि काउंटेबल नाउन्स को काउंट किया जा सकता है, उन्हें गिना जा सकता है, उनका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स को गिना नहीं जा सकता, उनका सिंगुलर फॉर्म ही होता है, उनका कोई सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं होता, बस एक ही फॉर्म होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है। उनका कोई प्लूरल फॉर्म हो नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, countable nouns can be girl, boy, planet, country, city, people, animals, ठीक है, ये है countable. You can count people, like 1, 2, 3, 4, and how many are there? Now there are, you can count students, 1 student, 2 student, but uncountable nouns are not countable. So you can't count water, for example. You can't count sugar. You can't count salt, right? So these are the things that you cannot count. So that's the main difference. Let's see what collective nouns are. Collective nouns are names for a group of people, things, or for a collection. अब collective nouns जो हैं, जो एक किसी चीज़, जानवर, इंसान के जो ग्रुप को एक नाम दे दिया जाता है, वो collective nouns होता है. So for example, if I say student, now that is a collective noun. But when I say a class of students, now the word class becomes a collective noun because it's referring to a collection of students. इसी तरीके से if I say player, a player or players are countable nouns, right? But when I say a team of players, so the word team becomes a collective noun since it's referring to a group of players. So let's read this and find out how collective nouns and uncountable and countable nouns work. Mind you, the red ones are countable nouns here, the words highlighted by red color, and the blue colored words are uncountable nouns, and the green colored ones are collective nouns. Last Sunday was a very hot day. The sun was burning hot. The heat was unbearable. There was no air in the atmosphere. Dust was everywhere. Everything went dry in the forest. Herds of animals, flocks of birds, and colonies of insects were perspiring. Little ones were crying restlessly. The army of ants, herds of deer, pride of lions, and other groups of animals looked for shade. Everyone prayed to Allah subhanahu wa ta'ala for a shower of rain. In the afternoon, some clouds appeared in the sky. It started raining heavily. Animals came out and played in the rain. The rain stopped, and after 2 hours, weather was very cool and pleasant now. Everyone thanked Allah subhanahu wa ta'ala. अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो जैसे डे और सन है, ये काउंटेबल हैं, यू कैन काउंट देम. सन इज अ स्टार, इन पर्टिकुलर वी कॉल इट सन, राइट? तो अब यहाँ पे जो है डेज को आप काउंट कर सकते हैं. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो डस्ट अनकाउंटेबल है. अच्छा, यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे एक मिस रिप्रेजेंटेशन है, अनबेयरेबल और ड्राई. ये दोनों ही नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है. तो इस वजह से जो है ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरीज में आ ही नहीं सकते. लेकिन हर्ड, फ्लॉक, इसी तरह कॉलोनी, आर्मी,
herd again, pride, group, ये सारे collective nouns है. इसी तरह animals जो है वो countable noun है. ठीक है, rain uncountable है. So this is how you can use countable and uncountable nouns. Now what I want you to do is I want you to attempt these two exercises below. You have to write a paragraph on the topic fruits in summer using countable and uncountable nouns. मैं चाहता हूँ कि आप एक पैराग्राफ लिखें अराउंड 6 लाइंस, एक 6 लाइंस का एक पैराग्राफ लिखें फ्रूट्स इन समर के टॉपिक के ऊपर, उसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को यूज़ करें. अच्छा, इसमें आपको कॉन्शियसली यूज़ नहीं करना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन. आप एक 6 लाइंस का पैराग्राफ लिखें, फिर उसमें से पिक आउट करिएगा कि आपने कौन से नाउन्स इस्तेमाल किए हैं और क्या वो नाउन्स काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं. राइट. फिर नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो क्या है, राइट 5 कलेक्टिव काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स ईच इन योर नोटबुक एंड यूज देम इन योर सेंटेंसेस. अब यहाँ पे आपको जो है वो 5 कलेक्टिव नाउन्स लिखने हैं, 5 काउंटेबल और 5 अनकाउंटेबल, फिर आपको उनके सेंटेंसेस बनाने हैं. सो आई होप दैट बाय नाउ you've understood what countable, uncountable and collective nouns are, and if you've still got any queries, any questions, then you can ask me or contact us through our WhatsApp number. Until next time, Allah Hafiz.